name is Rehana. I came from Pakistan and I was born there. We arrived here in Canada 2017. I have to hard find out this house because we came January, so that time all house is full. हम यहाँ पर जैसे कि दिसंबर 2018 में आए। यहाँ पर जैसे कि बच्चों के लिए जैसे कि उनकी ज़िंदगी बनाने के लिए यहाँ पर आए। तो हम अपने जैसे कि इनका फ्रेंड था उसके पास 1 महीना रुके हम वहाँ पर, क्योंकि कोई घर नहीं मिल रहा था, जैसे कि स्नो टाइम था वहाँ तब। When I see they ask me about 800 rent, I agree. And then we move here. 2 rooms, one is main bedroom, one is this, and this is all for the sitting room. I make half for my son. 1 महीने बाद हमें करब्स पे मिला, सेंट्रो करब से घर मिला स्टूडियो, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे कॉकरोच थे। तब भी हम वहाँ पर 2 साल तक रहे वहाँ पर। जब मेरे बच्चे का वहाँ पर हुआ तो इसके लिए फिर हमको चेंज करना पड़ा घर। तो इसलिए हमने 4.5 लिया ड्रोशे पे, और वहाँ का जो रेंट था काफ़ी ज़्यादा था और हम नहीं दे पा रहे थे वहाँ पर। 6 महीने वहाँ पर रुके और फिर चेंज कर लिया, इधर आ गए। इधर का रेंट अभी ठीक है। December 2019, they come and they said, I have to give you this letter, you have to sign for me, you have to move for July. I said, okay, but I didn't sign. They said, why you never sign? I gave you 6 months before notice. So I said, you gave me 6 months before notice. Suddenly my husband is sick. They have a COVID-19 positive. After I am COVID-19 positive, how can I move? So 3 days I am not sleeping. Then after the fight is start. जो इस बिल्डिंग का ऑनर है ना, उसको हमने एडवांस में दिया कि $100 आप हमारे तरफ से रखो और हमें ये घर दे दो। फिर 1 महीना बाद जैसे कि पहले इसने चाबी नहीं दी, फिर भी हम ऐसे ही सारा सामान रख गए कि चलो खुले घर में। Sometimes I am not at home. The owner come to my children. They ask, I want to ask your mom. We have to throw your outside stove. They said, my son want to live here. Do you think that's true, that their son wants to live? No. Our neighbor downstairs house, they charge for $1,300. So we are given for $800 per month. That's why they want to kick me out, and they have to bring new people and a raise for the rent. नीचे मेरी फ्रेंड रहती है 11 अपार्टमेंट पे। वो कभी कभी कहती है कि यहाँ पर थोड़े बहुत है, बेड बग्स कॉकरोचेस वगैरह है यहाँ पर। हमने उसको कहा था कि आप थोड़ा सा क्लीन करवा के दो। उसने बोला कि मैंने कुछ भी नहीं करवा के देना, आपकी मर्जी है, घर ऐसा ही मिलेगा, अच्छा है ये घर, साफ़ सुथरा है। हमने कहा नहीं, पेंट चाहिए। वो कहते हैं अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं करवा के देना। यहाँ पर जैसे कि वर्क बहुत हार्ड है ना, कि ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा कुछ, क्योंकि जो ABC से स्टार्ट करने का सिस्टम था, क्योंकि बच्चे भी थे साथ में, बहुत मुश्किल था जब मैंने मूव। When I suffer like these situations, now I want to teach about another people who don't know for this situation. How can you fight? How can you live in Canada? घर बनाए जहाँ फिर जो बिल्डिंग है ना, जैसे कि रेंट ठीक होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। My message for the people, go outside, don't sit at home. Go outside, knock the door for the organization. They're gonna help you, they're gonna support you.
don't be shy.